Hello students, the question is a point particle of charge capital Q is located at P along the axis of an electric dipole 1 at a distance r as shown in figure. The point P is also on the equatorial plane of a second electric dipole 2 at a distance of r. The dipoles are made of opposite charges Q separated by a distance 2a. For the charged particle at P not to experience any net force, which of the following correctly describes the situation? And the given options are: option 1, A upon R is nearly equal to 20, option 2, A upon R nearly equal to 10, option 3, A upon R is nearly equal to 0.5, and option 4, A upon R nearly equal to 3. So the problem is based on the unit electrostatics and in particular the dipoles and the calculation of net force as a sum of different individual forces. So the situation is like this: there is a point P, and at this point there is a charge capital Q. Now this particular charge is experiencing force. It experiences a force due to different charges, forces due to different charges like this charge, this charge, this charge, and this charge. So there are four force components acting on this charge. Now let us see the direction of these forces. For example, for this particular charge creates a force on this charge capital Q in this direction. If we assume it to be a positive charge, capital Q to be a positive charge, then this is the direction of the force due to this particular plus Q charge. Now let us call this force as F1. Similarly, the force due to minus Q charge, this minus Q charge is in this direction, and let us call this force as F2. Similarly, this particular charge creates a force on this particular charge capital Q in this direction, in this particular direction when joining these 2 points. Let us call this force as F3. Similarly, the force on capital Q charge due to minus Q charge placed here, the direction of force is in this direction. Now let us call this force as F4. And we have to find out the condition between A and R, the ratio A upon R, for which the net sum of these 4 forces is 0. So to make the net force as 0, we can easily see that for the force F3 and F4, the magnitude is same because this charge is capital Q, this charge is small q. So that's why the magnitude wise these 2 forces are equal. Now let us first write the expression of these different 4 forces one by one. The expression for force F1, F2, F3 and F4. Now 1 upon 4 pi epsilon naught, for the simplicity of calculations we write as K. Each and every place we write 1 upon 4 pi epsilon naught in the Coulombs law as K. So now let us write each force one by one. So first of all, the force F1. The force F1 is due to the charge placed at this point on this charge. So first of all, the formula is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, the Coulombs law. 1 upon 4 pi epsilon naught, in short we can write as K. And Q1 is this charge capital Q. Then Q2 is this charge, this, upon the distance, this distance and its square. Now this distance from the center to this point's distance is R, and this distance is A. So this distance between plus Q and capital Q is R minus A. So this becomes R minus A whole square. So this is the expression of force F1. The direction is leftward according to this figure. Now the second force is F2. So F2 is equal to K Q, capital Q, into small q upon the distance whole square. Now the distance between this point and this charge is R plus A. So this becomes, the formula becomes R plus A whole square. So this is F2. Similarly, we have to find out F3. F3 is equal to K times Q1, which is first charge, then the second charge small q upon
this distance and its whole square. Now this distance can be calculated by the Pythagoras theorem, because this distance is a, this distance is r, this is a 90-degree angle. So this particular distance between this charge and point P is square root of, this is square root of r square plus a square. And in the denominator we have to find out its square, so that it becomes r square plus a square. This value becomes r square plus a square. Similarly, the magnitude of force F4 is equal to K times capital Q small q upon r square plus a square and its whole square. So this is the expression of F4. Now we can easily see that these two magnitudes are same, and suppose this angle is theta and this angle is theta, then we can say that this angle is also theta and this angle is also theta. In this way, we can resolve the component of F3 and F4 in the vertical direction as well as horizontal direction. Now you can easily see that the vertical component of this F3 along this direction is F3 sine theta, and the vertical component of this F4 is along this direction, downward direction, F4 sine theta. And we can easily see that F3 and F4 are same in magnitude, so that's why the vertical component cancels each other. Only the horizontal component of these two forces remains. So we can write down the horizontal component, but first of all we have to write the value of cos theta. Now cos theta here, cos theta according to this diagram is basically base upon hypotenuse. Now base is a, the base length is a, and the hypotenuse is square root of r square plus a square. This is the value of cos theta. Cos theta is equal to a upon square root of r square plus a square. This is the value of cos theta. Now the total component along the positive direction, the total component along the positive direction is f2 plus f3 cos theta plus f4 cos theta. And since f3 and f4 are same, we can write it as 2 times k capital Q small q upon r square plus a square times cos theta, and plus f2. The value of f2 is k q small q upon r plus a whole square, and this is the component in the rightward direction. It must be equal to the leftward force, because we have to find out the net sum. We have to calculate the net sum to be 0. So if the net sum is 0, it means that the horizontal total component should be equal to, it must be equal to f1, that is the leftward component, and the value of f1 here is k capital Q small q upon r minus a whole square. Now you can easily see that this k capital Q small q, it cancels from both sides, and after putting the value of cos theta, the left hand side becomes 2 times the value of cos theta is a upon, now this is r square plus a square to the power 1 by 2, and this is r square plus a square to the power 1. So total becomes r square plus a square to the power 3 by 2, and this is equal to 1 upon r minus a whole square. Now at this particular point we have the expression between r and a, and further we have to solve it according to the rules of mathematics, and this is very tedious task. This is a tough task to solve such kind of expression. The simplest way for solving the objective type questions is we can put the respective values of a upon r in this expression and check at which particular condition this left hand side is equal to the right hand side. That's the easiest way. So from this expression we can start from expressions 4. A upon r is 3, nearly 3. It means that a is equal to 3r. So at each and every place, instead of a, we put the value 3r. So this becomes r plus 3r means 4r whole square, and this is plus, and this is 2 times 3r upon r square plus a square. A square is 9r square from this expression. 9r square plus r square is 10r square, and its power 3 by 2. And in the right hand side it is now we are checking whether this is equal or not for this particular case. So 1 upon
the value of A is 3r. So r minus 3r is 2r, and 2r square is 4r square. So this becomes 4r square. Now this thing becomes 1 upon 16r square plus this thing becomes 6r upon 10 to the power 3 by 2 into r to the power 3 is equal to 1 upon 4r square. Now you can easily see that this r cancels this r cube and becomes r square. Now in this way we can take r 1 upon r square as common and cut from both sides. So we can say that this expression becomes 1 upon 16 plus 6 upon 10 to the power 3 by 2. We are checking whether it is equal to 1 upon 4 or not. Now 1 upon 4 is 0.25 and 1 upon 16 is 0.0625, and you can calculate that the value of this is 1 upon 10 to the power 3 by 2. We can write it as 1 upon square root of 10 and its cube. We can easily find the square root of 10. It comes out to be, the value comes out to be, the square root comes out to be 3.162, and 3.162 we can take its cube. So this value comes out to be, now here one more thing is also present, this 6 is also here. So this 6 is also here. So plus 6 upon 10 to the power 3 by 2 we can calculate, and this must be equal to 0.25. So after calculation we can easily see that these two left hand and right hand side are same, because when you take the cube of 3.12 then it becomes nearly equal to 32. 6 upon 32 you can calculate, and this value, the left hand side and right hand side values are same. So we can say that option 4 is correct here in this way. So this is the answer. So यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए गए हैं, डाइपोल 1 डाइपोल 2, और उनके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट P, जिस पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है. जो ये चार्ज रखा गया है पॉइंट P पे, ये पहले वाले डाइपोल के जो है एक्सिस पे इस तरह से लाई करता है और दूसरे वाले डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है. डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2a, रेस्पेक्टिव चार्जेस प्लस q माइनस q हैं. डिस्टेंस की बात की जाए तो इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी r है, स्मॉल r है. हमें नेट फोर्स को 0 बनाना है a अपॉन r रेशियो के लिए. एक पर्टिकुलर a अपॉन r रेशियो हमें चूज़ करना है जिसके के लिए नेट फोर्स इस पॉइंट पे 0 हो जाए. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फोर्सेस किस तरह से लग रहे हैं अलग अलग चार्जेस की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज कैपिटल Q पे. सबसे पहले हमने कहा कि प्लस Q चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है F1 जो कि लेफ्टवर्ड है. फिर हमने कहा कि माइनस Q चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पर एक फोर्स लग रहा है F2 जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में है. फिर उसके बाद हमने कहा कि प्लस Q चार्ज ये वाला है, इसकी वजह से फोर्स जो लग रहा है वो इस तरह से F3, इसकी ये डायरेक्शन है अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये अवे द चार्ज है क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा. ये वाला चार्ज जो आप देख रहे हैं माइनस Q एक नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से फोर्स की डायरेक्शन जो है अलोंग द लाइन और टुवर्ड्स द चार्ज माइनस Q होगी. इस तरह से हमने फोर्स लिख लिए. फिर उसके बाद हमने इन फोर्सेस की जो है एक्सप्रेशन लिखी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. जैसे हमने F1 लिखा, K हमने लिखा F1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की जगह, ताकि एक क्लीन और शॉर्ट हैंड नोटेशन हम लेके चल सकें. सो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर, क्योंकि आप देखते हैं ये डिस्टेंस जो है इस पर्टिकुलर चार्ज से इस पर्टिकुलर चार्ज की जो डिस्टेंस है वो है r माइनस ए, सो इसका होल स्क्वायर. F2 निकालने के लिए हमने कहा इस पॉइंट चार्ज के और इस पर्टिकुलर चार्ज कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस है r प्लस ए, तो इसका स्क्वायर. फिर हमने F3 लिखा. F3 लिखने के लिए हमें पहले ये डायगोनल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर हाइपोटेनस पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की. अगर ये लेंथ आप देखते हैं स्मॉल a है, ये r है, तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी, इसकी हाइपोटेनस की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. और उसका जब हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा F4 के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा है. फिर उसके बाद हमने इन फोर्सेस को के कंपोनेंट रिजॉल्व करे F3 और F4 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट F3 साइन थीटा होगा और जो इस वाले का वर्टिकल डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड वो होगा F4 साइन थीटा. क्योंकि F3 और F4 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है इसलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. केवल F3 F4 के जो कंपोनेंट रिमेनिंग रहेंगे वो रहेंगे अलोंग द राइटवर्ड डायरेक्शन. तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में 3 फोर्सेस हमें मिलते हैं. एक F2 मिलता है, एक F3 कॉस थीटा मिलता है और एक F4 कॉस थीटा मिलता है.
ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करी और इनको नलीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इनके इफेक्ट को, लेफ्टवर्ड फोर्स का इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस के बराबर होना ज़रूरी है। तो इसको हमने राइट हैंड साइड में F1 के बराबर रख दिया। इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते गए, सॉल्व करते गए, आर और ए के टर्म्स में इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो काफ़ी टीडियस टास्क होगा। बेटर ये है कि हम अलग अलग जो ये वैल्यूज़ हैं ए की इन टर्म्स ऑफ आर पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि किसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड मैच होती है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि फोर्थ जो चॉइस है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली ए बराबर 3R, अगर हम वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बहुत ही कम स्टेप्स में हम जो है वो ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इसी चॉइस के लिए मैच हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.